हेलो जी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो प्रीवियस कुछ दिनों से मुझे कांस्टेंट टेक्स्ट मिल रहा है कि भैया हाउ कैन वी आल्सो स्टार्ट दी प्रोग्रामिंग। ओके, सो भैया एक कंपनी है XYZ एंड एक है ABC। सो उन दोनों में से कौन से DSA कोर्स मैं ले लूँ टू स्टार्ट विथ माई प्रोग्रामिंग जर्नी। बट द पॉइंट इज when everything is available in free in YouTube, then why you guys want to pay for that? Okay, but then मुझे रिप्लाई मिलता है वहाँ से कि भैया सब कंटेंट ना क्यूरेटेड नहीं है। लाइक मैं लैंग्वेज कहाँ से सीखूँ, मैं STL कहाँ से सीखूँ, मैं DSA कहाँ से सीखूँ और कौन सी टॉपिक मैं कहाँ से सीखूँ। ओके, सो ये वीडियो में अपने करने वाले हैं डिस्कशन कि आप कौन से टॉपिक, आप किस जगह से, कौन से चैनल से, इवन कौन से सिंगल प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट कर लो सो डैट आपका DSA पूरा फिनिश हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो एंड दैट क्यूरेटेड कंटेंट, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस समथिंग। लाइक हमारे यहाँ ना दो तरह के लोग होते हैं। द फर्स्ट वन इज जो हर एक वीडियो पे जा कर के देखेंगे, लाइक वो बंदा पहले ही 10 DSA सीट देख चुका है और मे बी ये उसका 11वां है, ठीक है, और उसको करना है नहीं कुछ, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज जो ये सिर्फ देखने के लिए आए हैं और वो ये वाले DSA सीट को करेंगे अपने में बुकमार्क और वो कर देंगे इसको फिनिश और एट द एंड वो एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर के निकल जाएगा। नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू गाइस इज आई एम नॉट गिविंग यू एनी कमिटमेंट दैट ये वाला सीट आप लोग 30 दिन या 60 दिन में फिनिश कर रहे होंगे। ओके, बिकॉज एवरी वन हैव देयर सेल्फ पेस्ट। कोई काम कर रहा है दिन में 2 आवर्स, कोई आज काम कर रहा है सर्विस बेस में जिसको टाइम मिल रहा है कम, कोई है कॉलेज स्टूडेंट। तो सभी कोई अपने अपने हिसाब से ये वाला सीट को पूरा फिनिश करना लाइन बाय लाइन एंड एट द एंड यू गाइस विल गेट अ गुड प्लेसमेंट दैट आई कैन प्रॉमिस यू। While preparing this seat you guys have to create your own notes because वो notes आपकी करने वाली है हेल्प इन योर लास्ट टाइम रिविजन। किसी की कोई बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है कि DSA सिर्फ प्रैक्टिस करो हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। बट अगर आपका नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू है, आप वो 600 प्रॉब्लम्स 500 प्रॉब्लम्स बैक जा करके देखना पॉसिबल नहीं है। सो एवरीवन नीड्स रिवाइज टाइम। ओके, सो अपना एक प्रॉपर नोट्स बना करके चलना। So with this we are starting with our video. So this is the beginner to advanced in DSA curated content, not any kind of seat। बस आप इसको अपने में बुक मार्क कर लेना और लाइन वाइज चलते हुए जाना। ओके, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग जर्नी आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गो विद द C++ लैंग्वेज। ओके, अगर जावा के थ्रू जा रहे हो देन इट्स फाइन, या आप पहले से जावा कर रहे हो देन इट्स गुड। बट द पॉइंट इज आई हैवंट डन जावा, सो जिसके बारे में जो चीज़ मैंने करा है नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट करना इज़ नॉट गुड। सो बट इन DSA वी कैन यूज़ एनी लैंग्वेज, only matter is our logic। okay, how we are building our logic, that's important more than the language। okay, so I am assuming that if you are a beginner you can begin with this C++ programming language। okay, now with this language first of all हमें सीखनी पड़ेगी वो लैंग्वेज कि अपने C++ लैंग्वेज कहाँ से सीखें। okay, so the first one you can go with the code with Harry playlist। okay, this one is the curated content जहाँ पर आपको पूरा बेसिक से वो लोग कंपाइलर इंस्टॉल करवा करके आपको पूरा आपका प्रोग्रामिंग एक जर्नी स्टार्ट करवा देंगे along with some oops जो कि इम्पोर्टेंट रहता है इन दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इसके अलावा इफ़ यू गाइज वांट टू गो विद दी लव बब्बर भैया playlist, then you can go with the learn C++ language, then pointer, then oops, because this all three will be needed in the upcoming DSA or in the upcoming algorithm purpose। so हमें इतना तो फिनिश करके चलना है।
ओके, सो विद दिस यू कैन कंप्लीट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही होगी, अब आप अपने जो आप सोच रहे हो, जो आपका लॉजिक बन रहा है, उसको आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप उसको कैसे कोड कर पाओ, ये आप समझ जाओगे। उसके बाद in every programming language there is something, means some function which is already pre-written for you guys. You don't have to implement it. Suppose if we are using any data structure like the stack, queue, linked list, map, unordered map, okay, so we don't have that much time to implement all these first, then we can use that. Okay, so there is a library in every programming language where they have pre-written this code. You guys just have to pick it up and start your coding part. Okay, so in the C++ we have something called the standard template library, which is STL. Now I am recommending you 3 links for this. First one is the LUV, basically the love भैया, okay, इनका वीडियो देख करके मैं यहाँ पर STL सीखा था। जब STL सीख रहा था उस टाइम पे बब्बर भैया या स्ट्राइवर भैया की वीडियो थी नहीं, ओके, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव ऑल्सो बब्बर भैया की भी एक है, स्ट्राइवर भैया की भी एक है, बट आप किसी भी एक बंदे का देख लो, कॉज सभी कोई एट दी एंड पढ़ा रहा है वही चीज़, बिकॉज एट दी एंड चीज़ तो वही ना है, लाइक आपको स्टैक, क्यू, पुश बैक, पुश एंड ऑल, ओके, सो एट द एंड सब आपको पढ़ा रहा है यही चीज। सो आई विल रिकमेंड यू गाइज टू गो विद द फर्स्ट वन, दिस C++ STL with the love भैया, ओके। आफ्टर दिस you need some understanding of the time and space complexity. Moreover, अपने जब जब डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व अपने करेंगे, तो अपने उस टाइम पे करेंगे फाइंड कि टाइम कितना लगा, स्पेस कितना यूज हुआ, ओके। हम लोग उस टाइम पे तो करना पॉसिबल है ही, बट जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस आई हैव provided you one video. The video is also of love bhaiya, which I have completed. So I am recommending you guys that you guys can check out this video to understand the basic knowledge of time and space complexity, कि अगर अपने एक कोड लिख रहे हैं तो इसकी कितनी टाइम है और इसकी कितनी ये स्पेस यूज कर रही है एंड ऑल, ओके। स्टार्ट विद द DSA, ओके। सो DSA में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आती है वो है इस सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक, लाइक द लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, एंड द सॉर्टिंग इज लाइक बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड ऑल। ऑल्दो जब भी अपने प्रोग्रामिंग में करेंगे कोड, वी विल ऑलवेज यूज द STL फॉर द सॉर्टिंग पर्पस, बट हमें मालूम रहना चाहिए कि अंडरलाइन ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है एंड ऑल, okay. So for this purpose we have to learn the searching and sorting technique, and there is one babbar bhaiya playlist, you can check out that, okay. And after that you can go with the array concept. Array concept means the 2-pointer approach and everything, means like the basic problems on the array. After completing this, I will recommend you guys to go for the sliding window technique of the Aditya Verma bhaiya playlist, okay. I have watched the entire playlist, so I can tell you this is one of the best playlist on the sliding window technique, okay. Now after completing this first 3, now the fourth one you can go with the hashing, okay. But for the hashing we can use the unordered map and the map, the same which we will learn in the STL video. But the point is, before going into that, this hashing video will tell you how this unordered map and the map is underline implemented, okay. What is the time complexity of every operation, because in all the problem we will not go into implementation of unordered map and map, okay, but we should know like how these all data structures are implemented, okay. For that purpose go with this video,
Okay, now after completing this first 4 topics, you can go into the Cyber Bhaiya SD sheet and complete the day 1 to day 4. Okay, and by completing this, you will be super strong in your basics. Like you can now solve the basic problem and you can now able to build your logic. Okay. After that, we'll go into recursion and backtracking. For this also I followed Cyber Bhaiya playlist. You can also follow that. But before going into recursion, you must have the basic recursion concept, because the Bhaiya playlist is starting from something around the medium level problem. Okay, so before starting that, you can do 1 or 2 recursion based problem by Google it out. Okay. Now for the link list, so you can see there are 2 links. The first one is for the link list basic. In this video, you can learn how we can insert in the link list, how we can delete a node from the link list, how we can add a node in the middle of the link list. Basically all the CRUD operation of the link list you can learn from that video. After you are good with that part, you can come to solve problem from the Cyber Bhaiya playlist, and the link is also given just after that. Okay. Now after completing the link list, the next one is stack and queue. Okay, so for this you can watch the entire playlist of this Cyber Bhaiya. Now the point is why I am referring the Cyber Bhaiya so much, because I have watched his every content, like every video till now, so that I am confident in that videos. That's the reason I am recommending that. And also I gone through some of the videos of the Babbar Bhaiya, Tech Dose, Love, and after comparing everything, I am giving you this curated content. Okay, so now after the completing stack and queue, we'll go for the greedy algorithm. For this, you can also check Cyber Bhaiya SD sheet day 8. There must be the 5 problems based on the greedy approach. Okay, and all the problem have some unique concepts, so you can just go through it once. Okay, so after completing till greedy algorithm, now we can move further with the advanced data structure like the binary tree and BST. For this also I am recommending to go and watch the Cyber Bhaiya playlist, entire playlist. There may be around 53 videos. Okay, so watch that playlist completely. Okay, now after that you can learn the binary search. For the binary search, I will recommend you to first go and watch Aditya Verma Bhaiya playlist. Okay, because I have seen that playlist and that playlist is just awesome. Okay, after that you can come and watch Cyber Bhaiya playlist. Okay, now for the hip you have to watch the Babbar Bhaiya playlist first to go and understand like how the hip is underline implemented and everything around this, like how priority queue is working. Okay, and the time complexity of every operation of priority queue and all. You can watch from the first video. After completing that, you can go with the Aditya Verma Bhaiya playlist, where you can see all the problems, and you can see some of the good concept and logic to solve all those. Okay, so this is my recommendation. Now after that, for graph and dynamic programming, for both of these you can follow the Cyber Bhaiya playlist. Now again, why I am referring for graph and dynamic programming for the Cyber Bhaiya playlist? Because I have completed the entire playlist and I am super confident in that concept. Okay, now till this much the interview purpose is over. Now if you have time before an interview, you can go and learn the bit manipulation, try, and the segment tree, but this is optional. Okay, if you guys have time, then only go and watch. Okay, so this is the entire set which you can follow to start your programming journey till the master your DSA. Okay, now along with this, we also have to practice on the lead code daily basis, because
it will help in your online assessment interview round. Okay, it will help you a lot in the online assessment interview round. Along with that, you have to give the weekly challenge and the bi-weekly challenge of the lead code on every week. Okay, you don't have to miss any single contest. Okay, now after that, I am also referring you one more contest, which is न्यूटन स्कूल मंथली कॉन्टेस्ट. ये कॉन्टेस्ट एक मंथ में होती है एक बार. यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसके लिंक एंड ऑल मिल जाएंगे कॉन्टेस्ट के. आई विल रिकमेंड दिस कॉन्टेस्ट बिकॉज इन दिस कॉन्टेस्ट यू विल ऑल्सो फाइंड वेरी गुड कोडर competing with you guys. Okay, and that's all. If you are focusing and targeting this to complete in 2 or 3 months, then you can definitely crack a good placement and a good internship. Who are now starting with their DSA and with a lot of content on the YouTube, they are also confused like from where we can practice and from where we can learn. Okay, so from this you can practice and learn, and trust me, if you follow this entirely to 3 to 4 months and complete this, you will crack a good placement rather than कि आप यहाँ से वीडियो करेंगे क्लोज, नेक्स्ट वीडियो जा करके फिर एक रोड मैप देख रहे हो. वो हमें नहीं करना होगा. ठीक है, इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा. मेक श्योर आप इसको बुक मार्क करके रख लो फॉर योर फ्यूचर नीड और वहाँ से एक्सेस करो. और इसमें जो भी अपडेट्स रहेंगी वो सब मैं सीट के थ्रू या फिर मैं चैनल के थ्रू बता दूंगा. सो मेक श्योर टू शेयर दिस अमॉन्ग ऑल योर फ्रेंड एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. Okay, so with this all we will wrap up this video. Have a great day.